Yes, good evening to all. I hope I am audible to you. This is a session for the discussion of UPSC previous year question. We call them shortly PYQ. So, as I have given one question for the practice in the last class. So, some of you have even given its feedback, but those who have not given, please try to provide the feedbacks because your feedback will be energy for me. Even as I mentioned, जैसे कि सबको पता है कि we are discussing previous year question papers of psychology optional from 1994 to 2021, and we are dealing one question per day. This is information for those who are new, and we will move ahead by this next question. So I will write first next question on the board. So आप अपने माइंड्स को मेकअप करिए और इसके सॉल्यूशंस को जनरेट करिए. So if you have psyche verse booklets or the books which will soon available in the markets, तो उसकी में आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 from introduction portion. Here is given question. I will write on the boards, then I will discuss answer. Question is very simply in a mention is there is mention examine. Here is written that examine the scope of application of psychology. Application of psychology in the different field, in the different field, and here is give a suitable example. Give a suitable example. Give a suitable example. So this is a question. This is our question, and thoroughly the question. Even you know that I'm not very good strong in technology, so whatever the technological errors like sound and so many things that you should correct by yourself, वो सारी चीजें आप अपने लेवल पे सही करिए. हाँ, बट माय मेन कंसर्न इज कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. दिस इज माय मेन कंसर्न. Okay, I hope question is visible. In case of not visible, please manage that. Right? क्योंकि फैशन और फजूल की चीजों में ना जाके सीधा कंटेंट पे फोकस करें. That will give you better understanding and picture psychology. So I will repeat the question. Examine the scope of application of psychology in different fields. So, as I mentioned in the last class, why not to solve the question? तो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? What is the demand of the question? Our first demand of the question means, as I mentioned, कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, so क्वेश्चन क्या चेक करें? What is the demand of the question? Right? What is the
scope of application of psychology in different fields. So first of all, they were asking about the scope of application. Means they were asking about the scope of application, right? Application in a different field. So the second demands is you must have just क्योंकि scope of application you can write off only one. You can write only one scope of application. But यहाँ पर a different field. तो other keywords is here is a different field. So this is the second demand of the question. And third demand of the question is give suitable examples. यहाँ पहले भी गलत लिखा examples rather than example. So यही छोटी छोटी गलतियों को हमें पकड़ना होता है कि जब क्वेश्चन पूछेंगे है तो उसमें हमें कुछ न कुछ जरूर टेक्निकल हो सकता है. If there is any technical thing, so that there is some technical things examples rather than example. So you need to give examples rather than one example. So here is requirement of the question is give suitable examples. This is these three things demands of the question. Right now, how we can fulfill the demands of the question. First of all, we need to check what is the basic knowledge of the questions. हमारे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास बेसिक नॉलेज क्या है? बेसिक नॉलेज वी मे हैव कि आपके कुछ फील्ड के नाम याद आ जाए. इफ यू हैव एनसीईआरटी स्टडी और एनी स्टैंडर्ड बुक्स, सो आपको क्या हो सकता है यहाँ पर कुछ सब फील्ड के नाम याद आ सकते हैं. लाइक आपको हो सकता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी याद बहुत जल्दी आएगा. अदर इज there is a counseling psychology, very quickly you will remember. Other is you may remember educational psychology. So educational psychology भी आपके दिमाग में बहुत जल्दी हिट करेगा. Other may also hit in your mind about the some basic knowledge such as maybe sports psychology, maybe other like a few others may like organizational psychology like this. So all these psychologies हो सकता है आपके माइंड में आपके हिट करें. मे बी more may be also more psychological fields hit करें. So just imagine while you are writing answer of this question, so क्या ये thought सिर्फ आपके मन में प्रोड्यूस हुआ है? Definitely this thought may arises, or I am sure about myself कि out of 100 this thought will be arises in the 100 out of 100 minds of the UPSC aspirant. सो सबके दिमाग में बातें आएंगी कि हमें ये लिखना, राइट. और मैं नहीं कहूंगा कि आप इससे अलग हैं. यू विल आल्सो राइट सेम थिंग, बट ऐसे मेंशन कि आप दो चीजें जब आप सेपरेट कर लिए, बेसिक एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. सो अब आप इसमें बिकॉज व्हेन क्वेश्चन इज सिंपल, एज्यूम दैट देयर आर आल्सो थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. One is easy questions, one is moderate question, other is difficult questions. So we have basically three category of questions. So if you will see carefully, this is easy question. Examine the scope of application. Examine the scope of application of psychology in different fields. तो ये इजी क्वेश्चंस में है बिकॉज
आपके मन में बेसिक बात है, बट यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना चाहिए। एग्जामाइन, what is examine? Examine means they are talking about assessment. They are talking about assessment. This is one of the important word for you. So that the fourth demand of the question, they were basically asking about examine rather than कि आप राइटिंग करें। examining means explain analysis की बात नहीं, in the various field of psychology. So how to write answer of this? इसके आंसर आप कैसे लिखें, कहां से शुरू करें? First of all, you need to think something different way. कैसे डिफरेंट में? आप थिंकिंग कैसे स्टार्ट करें या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? You may have three approach. यहाँ पर आपके तीन अप्रोच हो सकते हैं. So what is the approach of solving the question? There will be three approaches. Approach number one, traditional, जो कि सब बच्चे करेंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं. One is new approach. और new approach में you will follow the developmental rule of psychology. So यहाँ developmental approach आप use कर सकते हैं. Right? That is developmental approach. So you can follow developmental approach, or you can approach something new, other approach. Right? Other approach is very much unique. Like I want to suggest कि अगर आप psychology का scope of application in different field is asking, so आप क्यों नहीं ऐसे शुरू करते हैं? There is SDG को दिमाग में, because SDG is the goal of United Nations Organization. And SDG is the goal of India government. So any country, even any organization, definitely wants from their peoples, लोगों से इस बात को जरूर चाहेगा, राइट? अब वो इस बात के लिए जरूर चाहेगा कि वो आप उसको जो लिख कर दिखाएं, राइट? वो आप लिखकर दिखाएं कि आई मीन अपने पब्लिक से वो चाहेगी गवर्नमेंट की उसके पब्लिक इस तरह से ट्रेंड हो, उनके पब्लिक इस तरह की साइकोलॉजी हो कि दे कैन इजीली अचीव द गोल ऑफ एसडीजी. सो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं आंसर लिखना, कुछ अलग लिखना चाहें. ट्रेडिशनल अप्रोच इज दैट there are the different fields like counseling, psychology, and this, and what is given in NCERT you can follow them, what is given in other source you can follow from there. So you can follow by the different sources, right? So that here you can अब मैं जो अप्रोच में ट्रेडिशनल अप्रोच को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहूँ. आई विल रिपीट व्हाट मैंने क्या बोला कि सपोज आपके सामने क्वेश्चन था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, यू विल बस जस्ट क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें दो पार्ट्स सर्च करो. फर्स्ट पार्ट इज दैट व्हाट इज बेसिक एंड सेकंड पार्ट इज दैट व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. सो देयर आर द थ्री डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो तीन डिमांड्स हैं और बेसिक्स हमारे दिमाग में यही रहेगा. अगर हम इस बेसिक्स के सहारे जाएंगे तो डेफिनेटली आवर आंसर विल बी रॉन्ग. हमारे आंसर्स चांसेस है बहुत ज्यादा गलत होने के. ऑलराइट, सो दैट व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, इस केस में हम क्या करें, वी नीड टू फॉलो अ न्यू अप्रोच. और ये दोनों अप्रोच से अगर आप गए तो डेफिनेटली यू विल गेन गुड मार्क्स or better marks as compared to traditional approach. So मैं traditional approach को ना डिस्कस करके सबसे पहले because मैं चाहूंगा कि आपको एक new approach डिस्कस करूं कि right, so that new approach is what examine करना है और उस new approach को मैं आगे लिखना पसंद करूंगा so that
You will see क्या लिखना मैं चाहता हूं. What I want to write, please think carefully. Here, तो basically जो मैं बताना चाहता था कि सपोज आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं और आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, so you can go by this. Suppose there is a developmental psychology. Developmental psychology means when child is definitely before the birth, that is infancy. Before the birth, that is prenatal. I hope सबने पढ़ा होगा prenatal age. So when we have discussed about the prenatal age, so prenatal age में बच्चे के अगर कोई है तो उसको कैसे कैसे उसकी साइकोलॉजी अप्लाई की जा सकती है, हाउ साइकोलॉजी विल अप्लाई ऑन दिस फील्ड, या यहाँ से कुछ साइकोलॉजी के क्या फील्ड्स निकल के आते या नहीं आते. देयर इज डेफिनेटली वी विल यहाँ एक प्रीनेटल के लिए that is counseling psychology will help you, or no sorry clinical psychology. So यहाँ clinical psychology का concept आ सकता है. other concept like health psychology. So यहाँ से एक psychology आई health psychology, right? Health psychology. And while child in infancy age, right? So there will be basically a different type of psychology will grow, right? Suppose the child is basically there is medical psychology also, right? And there is medical is there, right? Medical is there. Other approach you can choose while it is in childhood, difference. So I'm just helping you कि अगर आपको बहुत सारे फील्ड ऑफ साइकोलॉजी याद नहीं आते तो अपने माइंड में इस तरह बना लीजिए कि इन्फेंसी एज में कौन सी कैसे साइकोलॉजी हेल्प करती है, चाइल्डहुड में कैसी एज चाइल्डहुड में कैसे करती है, देन एडोलसेंस एज में कैसे करती है साइकोलॉजी हेल्प, राइट. अदर इज व्हाई वी आर इन एडल्ट एज, जब हम एडल्ट एज में होते हैं तो कैसे साइकोलॉजी हेल्प करती है, देन ओल्ड एज में साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है, राइट. सो अब यहां से कुछ ब्रांचेस हो सकती है ओवरलैप करेंगी बिकॉज साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो डेफिनेटली फ्यू ब्रांचेस विल बी ओवरलैप. सो इस तरह से आप अगर माइंड में जैसे दिमाग में रखें इन्फेंसी एज में कौन सी ब्रांचेस निकल करके आती है, like definitely in the infancy age only that medical psychology you can say. तो यहाँ से only that medical psychology as I mentioned. In childhood age there will be other field of psychology means come childhood में normally sports psychology will comes. तो यहाँ से sports psychology plus adolescence में sports psychology, adult age में sports psychology आती है. And in the childhood there is other psychology like school psychology is there. School में ADHD है so many, और यहाँ पर भी स्कूल साइकोलॉजी आ सकती है, एजुकेशन साइकोलॉजी. सो जस्ट इस तरह से अपने माइंड में बनाइए कि साइकोलॉजी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर अप्लाइड हो सकती है, राइट. एंड इन द ओल्ड एज ना तो उसमें वहां पर हेल्थ एंड मेडिकल साइकोलॉजी विल एप्लीकेबल. So just I am telling you, I am helping you how we can develop these ब्रांच. कैसे इसमें हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजी की कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस निकल के, जैसे there is in the adolescence that is criminal psychology, adult age will be criminal, and it may be also into the middle age criminals. So different branch of psychology comes in a different age. तो आप इस तरह से डेवलपमेंट की लाइन ड्रॉ कर लीजिए और वहां से आप अपने माइंड में अभी मैप बना लीजिए बिकॉज इट इज नॉट टाइम ऑफ एग्जाम. तो इस तरह से आप यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं.
And second is which I want to suggest to you, that is जो SDC MDG के गोल है. You know that SDG goals are 17. There are the 17 SDG goals. उस 17 goals में one of them suppose that is here is zero hunger. Suppose zero hunger is here. So zero hunger definitely इसमें अप्लाई हो सकती है साइकोलॉजी. हाउ? बिकॉज पॉवर्टी के लिए साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है या करती है. अदर इज नो पॉवर्टी. नो पॉवर्टी में भी साइकोलॉजी विल हेल्प. सो इनिशियली यहाँ पर आप अलग अलग सेगमेंट्स ले सकते हैं कि सपोज the person who is hungry, the person who is poor, poverty can be been eliminated by the different ways. Suppose we can rehabilitate to them, we can provide basically organizational works, we can also provide them good mental health. तो means I want to say कि जो SDG के गोल्स हैं उसी गोल के अकॉर्डिंग, क्योंकि SDG के गोल तो सबको पाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कर दीजिए. एप्लीकेशन आप बता दीजिए कि साइकोलॉजी सर एसडीजी के गोल में अलग अलग ब्रांचेस के रूप में निकल करके हेल्प कर सकती है. तो दैट विल बी हेल्पफुल. तो थोड़ा सा आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है. अदर यू कैन select the next criteria that psychology will help at the individual level, as a group levels also. At the individual, as you know that psychology is a subject of individual, so definitely there will be too much fruitful. इंडिविजुअल लेवल पर साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं एंड ग्रुप लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं. राइट? तो दैट विल गिव यू समथिंग न्यू डायमेंशंस एंड न्यू थिंग्स इन योर आंसर्स. आपके आंसर्स में कुछ नयापन आएगा, कुछ अलग सा आएगा. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब इसके अलावा इसमें कौन कौन सी फील्ड आप जरूर मेंशन करें व्हाइल यू आर राइटिंग, और उन फील्ड के कुछ कीवर्ड्स बना लीजिए. सपोज हियर इज अ काउंसलिंग साइकोलॉजी. सो हियर इज अ काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट? हाँ, हियर इज बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजी. सो काउंसलिंग साइकोलॉजी को में आप इसको अब फील्ड्स को बताना, काउंसलिंग साइकोलॉजी के वर्क्स बताइए कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. एज आई सेड मेनी टाइम्स कि मैं कई बार क्लास में बोलता हूं कि 80% डिजीज इन आवर लाइफ आर बेसिकली साइकोलॉजिकल, ओनली 20% आर बायोलॉजिकल. काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? जहां मेडिसिन डिसीजन लेना बंद कर देता वहां काउंसलिंग से बात बनती है. एज यू हैव सीन द मूवी ऑफ मुन्ना भाई एमबीबीएस. एंड काउंसलिंग का एग्जामिन ऐसे कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड अगली की एग्जामिन करना है. तो काउंसलिंग हमारे लाइफ में ऐसे रोल प्ले कर सकता है कि many people are not able to achieve their goals, they are not on the right track. तो काउंसलिंग वहां पर हेल्प कर सकती है. तो उसके एटलीस्ट काउंसलिंग के 2 से 3 वर्ड्स आप बेहतरीन जो अपने मन में बनाए हो आप उसको मेंशन करें. Like I have one of the very interesting words, that is मेरे दिमाग में एक सेंटेंस रहता है कि काउंसलिंग वो कर सकती है जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं. अफसर मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो डॉक्टर बनने के लिए गया, लेकिन वो एक अच्छा काउंसलर बन गया. उस बॉडी में भी जान डाल देता है जो एक मरी हुई बॉडी होती है. उस बिगड़े हुए याद करो अगर मूवी अगर आपने देखी हो तो जो उसमें एक डॉक्टर रुस्तम है, उसके फादर को, इवन मैं मूवी के कैरेक्टर्स को कोड कर रहा हूँ, तो उसके फादर को भी वो जूस पिलाता जबकि उसका बेटा एक डॉक्टर है, फिर भी वो अपने फादर को उस समय हेल्प नहीं कर पाता. बट ऑल दैट थिंग इज पॉसिबल बाय काउंसलिंग. तो काउंसलिंग वो कर सकती है जो मेडिकल साइंस कई बार नहीं कर पाती. सो काउंसलिंग का एग्जामिनेशन ऐसे करें. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड एंड वी कैन डू लॉट्स. कुछ और फील्ड में लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी ऐसा ही मेंशन अभी मैंने बताया. इसके भी 2-3 वर्ड्स की वर्ड्स आप जरूर डालने की. क्लिनिकल साइकोलॉजी मींस व्हाट?
First of all, clinical psychology में you must differentiate therapies and psychologist और psychiatrist. थोड़ा सा बताएं कि right now the roles of psychologists are increasing day by day because mentally ill बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं तो आगे स्कोप ही स्कोप है. अब कुछ एग्जांपल देना चाहें तो आप अपनी मर्जी से दे दीजिए. Then the next field is education. As I told many times in the class, कि स्कूल कॉलेज की नाकामी ही कोचिंग ट्यूशंस को जन्म देते हैं. So sir, if our school system is good, स्कूल के तीन या एजुकेशन के तीन बड़े कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज टीचर, अदर इज स्टूडेंट, अदर इज एनवायरनमेंट. All these things are not working at the proper level, so that there is definitely lot of challenges. So वहां पर अगर इन तीनों को सही करना है तो उसमें डेफिनेटली साइकोलॉजी कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल और उसमें बहुत स्कोप है इसमें अप्लाई करके हम देख सकते हैं. Then the next field is that is school psychology. School psychology means that psychology which is related to only administration, decisions and planning and so many things that one. So इसमें भी आप दो तीन वर्ड्स अपने मन से रखें. Means even it is given in NCERT, even you can do other sources जहाँ से दो तीन वर्ड्स आप जरूर निकालें. And then you can dictate other is like sports psychology. Sports psychology, you know that you can put the one words by giving example. खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया. Why? Because खेलना will provide you the good mental health. And government is also spending lot of budget toward the basically wellness of the people. As I mentioned many times in the class, there is two industry: sickness industry and fitness industry. If you will go in a sickness industry, तो इंसान उठता नहीं बल्कि उठ जाता है. And while you will go into the fitness industry, बल्कि उसमें इंसान पैसे उसमें भी दोनों में खर्च होते हैं. एक में रो रो के पैसे देते हैं, एक में हम हंस के पैसे देते हैं. So sport is good things, and even it is very important for a country where 130 crores population. तो ऐसे देश में तो स्पोर्ट को बहुत सख्त जरूरत है प्रमोट करने की और इसकी साइकोलॉजी लोगों को चेंज करने की जरूरत है. स्पोर्ट को लोग एक अपॉर्चुनिटी नहीं मानते. इवन सम ऑफ आवर लेजेंडरी प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे पैसे बनाए स्पोर्ट्स से, तो उसमें काउंसलिंग स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस बताया जा सकता है. एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के वर्ड्स हैं जैसे मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग. एज आई नोटिस पर्सनल लाइफ में मैंने कुछ देखी अपने बाय द स्टडी की सम ऑफ देम कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया और वो एकेडमिक्स में भी अच्छा हो पाए या फिर उनकी डिसीजन की पावर उतनी स्ट्रांग थी जितना कि वो एक नॉर्मली ऑफिस में या एकेडमिक्स से होती है. So that next field of psychology is there that we can take, that is basically rehabilitation psychology. तो इसमें rehabilitation psychology का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, right? Rehabilitation psychology का भी एग्जांपल means right now it is very important because world के जो political order है और उसमें या इवन अर्बन रूरल माइग्रेशंस बहुत तेजी से हो रहा बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सो मेनी थिंग्स. सो इस वर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर वॉर कंडीशंस और ड्यू टू द इंटरनेशनल रीजन्स. सो ऑल दैट उसमें जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ की एप्लीकेशन होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. Then next is next examine of the branch of psychology you can do, that is media. And media is one of the important source for the development of cognitions. अब cognitions में कल inputs, any stimulus or medium and response. If you are receiving wrong data by any source, आप गलत डेटा अगर आपके माइंड में जा रहा है तो डेफिनेटली योर रिस्पांस विल बी पुअर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट योर रिस्पांस शुड बी करेक्ट. रिस्पांस आपके सही होने चाहिए. अदरवाइज सो मीडिया
is basically inserting wrong data in our mind, so that definitely that will promote communalism. So इस तरह से मीडिया के भी ऊपर हम वर्क कर सकते हैं टू प्रमोट बेटर साइकोलॉजी. अदर इज वी कैन यूज अदर इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. यहाँ पर और भी ब्रांचेस लिखना चाहिए तो राइट, दैट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. So industrial psychology is important because of एक ट्रेडिशनल मुझे लगता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल आउटपुट को ग्रो कर सकता है एंड इट एक्चुअली रिक्वायर्ड. And India is promoting MSME, means micro and small industries. So small industries can be promoted by entrepreneuring. तो स्मॉल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरिंग में भी हेल्प कर सकता है बाय साइकोलॉजिकली लोगों को प्रमोट करने, बिकॉज इंडस्ट्रीज हैव अ फोर बेसिक कंपोनेंट. लेबर को प्रमोट करता है, कैपिटल, ऑल दैट. तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में भी जो भी इसके कंपोनेंट, लेबर हो, मार्केट हो, रॉ मटेरियल हो या फिर कैपिटल हो, सो ऑल दैट कैन बी हैंडल एंड प्रमोटेड बाय साइकोलॉजिस्ट आल्सो. ये सारी चीजें साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हो सकती हैं. अदर इज you can take the next things, that is medicine psychology, right? Medicine psychology is there. So medicine ki bhi right now we must understand the importance of Ayush. Medicine की जो एक बहुत, you know that medicine works according to psychology, means as I told कि medical science में आपने देखा होगा कि sometime we goes to doctors और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर उस डॉक्टर पे ट्रस्ट है तो मेडिसिन काम करती है. If the trust is not good over the doctor, so medicine will not work in that case. So कुछ ना कुछ ऐसे आप अपने एक कीवर्ड सर्च करते चले जाएं. At least you should write 5 to 7 branches. So these are the basic things. ये आप बेसिक पॉइंट को आप हाईलाइट करें. एसडीजी एमडीजी को ध्यान में रख के बोलें. इवन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं. अंडर द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग वर्ड्स भी अगर आप कहीं डाल सकते हैं तो भी डाल दीजिए. कि इन द केस ऑफ डेवलप्ड नेशंस की जो डिमांड्स उसको भी साइकोलॉजिकल एप्लीकेशंस में किया जा सकता है, और डेवलप्ड नेशंस की जो डिमांड्स है वहां पर भी साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं. इंडिविजुअल्स के केस में अप्लाई कर सकते हैं. सो इफ यू विल ऐड एट लीस्ट 3-4 डायमेंशन, लाइक फर्स्ट थिंग आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो और 2 से 3 डायमेंशंस लिख रहे हो, और प्लस आप लास्ट में इसके अच्छे एग्जांपल्स भी ऐड कर दे रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल आल्सो विल बी ऑन द राइट साइड. सो फर्स्ट, अब मैंने जो आंसर्स बताए मैंने इसको इरेज कर दिया. सो हियर व्हाट इज फर्स्ट थिंग, जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है वो गो बाय द क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, देन डेवलपमेंटल एंड डेवलपिंग, देन एसडीजी एमडीजी के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करिए. देन उसके बाद उसको एग्जामिन करने के लिए कुछ बता दीजिए, दीज आर द मेजर फील्ड्स, and then last में you will you need to give the examples. कुछ examples देते जाइए. Yes, I have given the example of movies, as you can give the example of real life. Even you can also write some government schemes के नाम. जैसे मैं न्यू इंडिया की बात करूँगा. Here sir, psychology will be good and it is suitable for applicable. Psychology को अगर सही से apply करें तो ये न्यू इंडिया में भी काफी help कर सकती है. So that एक भी पॉइंट अगर आप न्यू इंडिया को अंडरलाइन करें, बिकॉज आपकी थिंकिंग पावर एंड डायमेंशंस दे वांट टू चेक. सो डाइवर्स डायमेंशंस ऑफ थिंकिंग इफ दे आर चेकिंग, सो डेफिनेटली वी कैन राइट इट. सो इसका आंसर आप इन सारे वर्ड्स के सहारे लिख करके आप मुझे दिखाइएगा और सेंड करिएगा. रिमेनिंग्स इफ यू आर नॉट आंसर्ड, सो आपको लगेगा कि अगर आंसर्स नहीं हो पा रहा, सो आप जरूर हमें बता सकते हैं. इवन आई विल हेल्प यू इन द राइटिंग ऑफ आंसर. तो पूरी तरह से लिख करके, अब मुझे नहीं लगता अगर आपको डायमेंशन सारे मैं ओपन कर दूं और उसके बाद भी आप अगर आंसर ना लिख पा रहे हैं, सो दिस इज
फिर तो फिर मुश्किल है। बट हाँ, अगर डायमेंशन सारे ओपन कर दिए और ओपन करने के बाद आप अपनी सेंटेंस में एटलीस्ट 2 3 4 सेंटेंस यू शुड राइट इन ईच केसेस। हाँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी होता है। So thank you for the today's session, and we will meet again tomorrow with the new question. That thank you for the class, or thank you for joining to us.